Again, guys. Good evening to all of you. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Good evening. Am I audible, visible? Yes, sir, audible, visual. Yes, sir. Very good. So welcome back, and welcome back to the sessions of maths. And particularly today we are going to start with your speed, distance, and time. Just a second. So basically, this is our today's agenda. Speed, distance. और आज शुरू करेंगे मेन से जितने भी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स स्टेप्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कुछ भी होता है वो आज पढ़ लेंगे मोटा मोटा से और करेंगे शुरू। सो बेसिकली 25 सितंबर का टाइम टेबल चल रहा है आपका। 9 बजे डिफरेंस अपडेट, 9 बजे क्लास, 3 बजे जीके, 5 बजे इंग्लिश, 6 बजे। So I hope you guys had revised your previous percentage and profit loss. ठीक है ना, उसको रेगुलरली रिवाइज जरूर करते रहना। जितने भी ट्रिक्स वगैरह जो भी चीजें हैं उनका देखो इंपॉर्टेंस यही है कि अगर वो वाली बातें याद रह गए तो बस वैल्यू है, वरना तो फिर अगर दिमाग नहीं चला एग्जाम में तो उसकी कोई वैल्यू। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच कैपेबल यू आर इन लर्निंग द थिंग्स, मेमोराइजिंग द थिंग्स। वो रटने वाला जो सीन है वो करना ही पड़ता है। ठीक है ना, चीजें रटनी तो पड़ती है, याद हो तो करनी पड़ेगी ना, याद नहीं रहेगा तो क्या। चलो सबसे पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बचपन से तुम लोगों ने पढ़ा कि स्पीड क्या होता है। रेट एट विच एनी मूविंग बॉडी कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जिस भी रेट पर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हो उसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस इज टू स्पीड। ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड को मीटर पर सेकंड होती है और इसको किलोमीटर पर आवर में भी करा जाता है। कन्वर्जन वगैरह इसके कुछ इस प्रकार से होते हैं कि 1 घंटे में कितने से मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना, 1 घंटे को 60 मिनट, यानी कि 1 आवर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। मैं क्यों कितने सेकंड्स हैं तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। 1 किलोमीटर में 0.625 माइल्स हो गए। याद रखना इस चीज को बहुत। 1 किलोमीटर में 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर। बहुत ही कॉमन सवाल है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, और वाइस वर्सा, दैट इज मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, हम मीटर पर सेकंड में जाने हैं, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई। ऊपर 5 आया है, 5 छोटा नंबर है 18 से। मीटर पर सेकंड छोटे में जब जा रहे हो तो ऊपर छोटा नंबर। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है तो ऊपर बड़ा नंबर, ओके 18 लिखो, दैट इज नीचे 5 लिखो ऊपर 18। बस ये रूल याद रखिएगा। रिमेंबर दिस रूल दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम द अपर यूनिट दैट इज फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, it goes from multiply by 5/18 since a 5 is a smaller number, meter per second is also a smaller quantity, or you can say smaller unit. Similarly, vice versa, when you are going to the kilometer per hour, 18/5, 18 is a larger number. So these are the basic things you have to memorize. I cannot do anything in that. 1 yard is 3 feet. ये तो तुम लोगों को वैसे भी याद होगा। क्रिकेट पिच 22 yards, 22 into 3 कर लो 66 feet ऐसे बोल सकते हो। 1 foot 12 inches. You can remember it by your height. You generally say I am 5'8", 5'9", 5'12", and 6 feet. So what does it mean? 5'12". That is in 1 foot you have a 12 inches. Got my point? So these are the basic formulae. I hope you all are aware about this. These are some conversion. Very helpful. Next most important thing is average speed. Average basically is the total distance traveled upon total time taken. Whatever the distance you travel divided by total time taken. Suppose you have traveled 80 kilometer and you have taken 2 hours. So what is your average speed? 40 kilometer. Simple, nothing else. Next is simple. Basically, if you cover
a distance d. First you go by a kilometer per hour. Then you come back with a speed of b kilometer per hour. Got my point? A kilometer with a kilometer per hour you go, with b kilometer per hour you come back. During the whole journey, what is your average speed? Remember guys, when you are doing the things for the same distance, you can remember this direct formula, that is 2ab upon a plus. It is very simple. Let me brief you. Yeah, I concept. Suppose you go 40 kilometer per hour. First you go at an average 40 kilometer. You have to cover the distance of 40 kilometer. First you go at an average speed of 10 kilometer per hour. Then you come back at an average speed of 8 kilometers per hour. Got my point? What is the formula for average speed? Average speed is total distance upon total time taken. Total distance is how much? 40 you go, 40 you come back. Total time. Time in the first go. Distance upon speed. Distance upon speed. 40 upon 10. That is 4 hours. You can remember it like this, 40 upon 10. Similarly, for the second phase, 40 upon 8. You can keep it like this, 40 upon. Now you can see here clearly that double of 40 upon, when you take the 40 common from the bottom, 41 upon 10 plus 1 upon 8. Here you are getting 40 out, cancel 40. Now, how you will solve this one? 8 into 10, this will go 10 plus 8. This 8 into 10 go into the top. You will come here 2 into 8 into 10 divided by 8 plus 2. Now you can clearly see this will be your A, this will be your B, this will be your B, this will be your A. So you can easily derive the formula to AB upon this. You can directly remember this formula that when you have to find the average speed for the same distance go, same distance come back, then you can use the formula 2AB upon A plus. Any doubt so far by anyone? If anyone, you can ask. Chalo. Bolo. So if there will be a change in distance, then you have to use the simple formula, total distance upon total time taken. Nothing else. Please speak Hindi. I am speaking in Hindi. Since the thing is like that, you guys are very much expected to be very comfortable in English. So preferably we speak in English because most of the students demand like that. However, we speak in Hindi English. Mostly English because it is very well expected from you guys from the CAT, CDS, AFCAT students to be well versed in at least understanding some basic. Just keep your mic on. A train has to cover a distance of this in this hour. What is the speed in meter per second? सुनना जरा. First of all, आप लोग average speed निकालो. Average speed बोलो, speed बोलो. Total distance upon total time. तो 900 upon 25. This is your kilometer per hour. आपको ये convert करना है मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड में जाना, so you have to multiply it with 5 upon 18. So 5 5s are 25 or 18 5s are 90. So you will get it 10 meter per second. If I ask you to convert 40 meter per second into kilometer per hour, so simple, it will be come back again 18 upon 5. Multiply with the 18 upon 5 to come back in the kilometer. So it will be at 8, 18 it's a 140 kilometer per hour. अगर ऐसा कुछ भी आता है तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड. This is very common trend to come. If a person covers equilateral triangle field shape at a speed of this on first, second, third side, reaches back to the starting point, go find his average speed.
So there's an equilateral triangle. So A distance, A distance, A distance. Average speed is what? Total distance travel. So A plus A plus A upon total time. पहले वाले में time कितना है? Time का formula distance upon speed. Distance upon speed. Distance upon speed. So this will be your total time taken. So total distance travel upon total time. Here you will get 3A upon A taken common. And here you will get it LCM 120, no, 40. So यहाँ पर जाएगा 4 plus 2 plus 1. So A plus A 3 into 40 upon 4 plus 2 6 plus 3 7. This will be our average speed, that is 120 by 7 kilometer per hour. Simple. बहुत ज़्यादा simple. I guess 8th level standard questions. Next. A taxi goes from A to B Sir, at an repeat करो ना एक बार. total distance travel upon total time taken. A distance यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया. करा गया इसमें. Time का formula क्या होता है? Distance upon speed, distance upon speed. Simple solve कर दिया. क्या repeat क्या? समझ नहीं आया. क्या कुछ ऐसा बताओ जो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है? कुछ हो तो बताओ. सर ये 4 plus 2 plus 1 ये कहाँ से लाया सर? 1/10 plus 1/20 plus 1/40. LCM is 40. 10 के टेबल में 40 किस पर आता है? 4 पर. 4 1 जा 4. 20 के टेबल में 40 किस पर आता है? 2 पर. 2 1 जा 2. 40 के टेबल में 40 किस पे? 1 पर. 1 1 जा 4 plus 2 और 1 6 7. 7/40 ऐसे. Got it? Yes sir, thank you sir. तो टैक्सी जाती है A to B. पहले चले गए एट द स्पीड ऑफ दिस, फिर वापस आ गए एट द स्पीड ऑफ दिस, और सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो हम लोग एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2AB अपॉन A प्लस B. दैट इज 2 into 84 into 24 अपॉन 84 plus 54. तो सिंपल है क्या? 2 into 84 into 24. 4 4 8 8 2 10. तो देखो इससे कटेगा भी. 12 से काटोगे 2 पर, 12 से काटोगे 9 पर. ठीक है जी. और काट दो. 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 28 पर. 3 से काटोगे तो ये, अब इसे कुछ नहीं कटेगा, तो 28 चुका 116. ठीक है जी. कुछ और कट भी नहीं रहा ना, तो डिवाइडेड बाय 3 तो 28 आ जाएगा. तो 100 कितना होगा? 2 2 जा 4 4 जा 32 4 जा 12 112 112 28 चौका जाएगा. तो मैंने 116 कर लिया. सिंपल है ना. ज्यादा सिंपल में ना आदमी कैलकुलेशन को ज्यादा जल्दी करता है. A person covers 900 kilometer by train at the speed of this, 900 kilometer at the speed of this, 1200 kilometer at the speed this, 300 kilometer at the speed this. Find the average speed of whole journey. Average speed का क्या formula? Total distance travel upon total time taken. Distance पहले चला 900 किलोमीटर, फिर चला 1200 किलोमीटर, फिर चला 300 किलोमीटर. टोटल टाइम टेकन, पहले फेज में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 900 बटे 180. तो निकालो ही निकालो. काट दो इसको. 18 पंजे 90, 5 घंटे 5 आवर्स. प्लस 1200 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस, तो कितना टाइम लगेगा? 1200 बटे 240. तो 5 पे कट जाएगा. इट विल बी कैंसल आउट एट 5 आवर्स. नेक्स्ट 300 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस, तो टाइम इज व्हाट? 300 डिवाइडेड बाय 50. 6 पे कट जाएगा 6 आवर्स.
So 1200 plus 3, 500, 1500, 15 plus 9, 2400, 5, 5, 10 plus 16. 4 से काटोगे so 4 पर and 4 से काटोगे तो 4 6 are 24. 4 से काटोगे तो 15, 150 kilometer per hour. Simple, nothing big. Next, Ram traveled from A to B at an average speed of 80 kilometer per hour. A to B at an average speed of 80 kilometer per hour. He traveled 75% of the distance in 2/3 of the time and rest at constant speed of X kilometer per hour. Find the. Now listen to very carefully. 75% of the distance. That is in the second phase, 25% of the distance. In first, there's a 2/3 of the time. 2/3 of the time. That is remaining is 1/3 of the time. Now you just have to assume some distance. So all the calculation will become easy. Suppose distance he traveled is 240 kilometers. This whole distance from A to B is 240 kilometers. So 75% of 240. 75% is 3/4. 3/4 of 240. That is 180 kilometers. And remaining 60. Got it. What is the total time taken? Total time is how much? 240 kilometer total. At the average speed of 80 kilometer per hour. So he has taken total 3 hours. In the first part, 2/3 of the time. That is 2/3 of the 3 hours. That is 2 hours. And 1/3 of the hours it will be 1. So this is whole scenario which we have taken for our calculations. 3/4 is 75%. 75% is 75 upon 100. 25 3s are 75. 25 4s are 100. Got my point? So in the first part, that is 75% distance, 180 kilometer. In the second part, 25%, that is 60 kilometer. First total time taken is 3 hours. First part would be 2/3, that is 2 hours. And in the second part, it will be 1. What is the value of X? It is the X is the speed of the second phase. Speed of the second phase. Speed of the second phase. Speed is distance upon time. 60 kilometer in 1 hour. 60 kilometer in 1 hour. That is 60 kilometer per hour. This is your value of X. Always you assume करके करना है ना sir. हाँ, you should use the assumption. So always you can say it's a very simple thing. Always take a multiple of this speed. Always take a multiple of something to make your calculation easy. Just take some distance, use the concept of the speed, find the total time, and put down the things whatever is given. 75% distance, 180 kilometers. 25% distance, 60 kilometers. First में 2 hours, second में 1. Simple करना कुछ नहीं करना. Next. So basically, these are the all favorable questions we have for the averages. Next concept talks about the constant cases. Constant ratio, what is it basically? Let me brief you something. We all know there's a simple direct formula, that is speed is equals to distance upon time. If I say distance is constant, then we can directly say speed is inversely proportional.
Now listen multiple things. Distance is directly proportional to speed into time. Got my point? तो पहला केस क्या है? If distance is constant, then speed is inversely proportional to time, or time is inversely proportional to speed. एक दूसरे के रेशियो के अपोजिट. If you take two conditions, that is distance, speed 1, time 1. Second condition, equal distance, speed 2, time 2. Then you can clearly say that is speed 1 upon, since when you put them equal, so you would say speed 1 time 1 equal to speed 2 time 2. So you can directly derive formula speed 1 upon speed 2 time 2 upon time 2. Next, if time is constant, distance directly proportional to speed. Why? We have just derived the formula distance is equals to speed into time. If time is constant, so distance directly proportional to speed. So again, using the concept that is equal time, so d1 upon s1, d1 upon s1, and d1 upon s1, d2 upon s2. S is constant, so distance is directly proportional to time. d1 up equals to s2 and d2 s2. So speed को equate करोगे, so d1 upon d2 is equals to d upon d2. Simple. Yes, ask. So in these cases with Not getting your words. Not getting your words. in these cases with the Yeah, just let me explain. I am coming on that. I am coming on the examples. Don't do. I know. You got my point. I know how to arrange the things. Chalo, first question. The ratio of the speed of the two trains is this. If the first train covers 350 km in 5 hours, then the difference between the speeds of the both trains. Ratio of the speed of the two trains is this. First, we'll start with a very simple thing. First train covers 350 km in 5 hours. What is the speed of the train? 350 km in 5 hours. That is 70 km per hour. Check it. This is this 2:5. Speed 1 is to speed 2. This is given to you, no? Speed 1, speed 2. So 2:5. So 2 key value is given to you 70 km per hour. That is 2 into 35. What is the difference between the speed? 2 and 5. 2 and 5. What is the difference? 3. This you have to find. 3 into 35. That is 105 km per hour. If you not got through this, then you can do by the small things. Suppose the speed of the first train is 2x. Suppose the speed of the second train is 5x. Difference of the value of the first speed you have got, that is 70 km per hour. From here, you will get x is equals to 70 upon 2. That is x is equals to 35 km per hour. What is the difference between the speed? That is speed 1 minus speed 2. 5x minus 2x, that is 3x. 3x. Putting the value of x, 3 into 35, that is 105. So I have told you by the smart thinking process, in which you can conclude the question within 1 line and 2 lines. I have briefed you by the bookish language also, in which you have to, I don't know how many lines you need it. It's all up to you what technique, what thought process you want to adopt. Ask. Sir, can you please explain the case 3 once again? Once again, simple. First x speed ko 2x मान लो. No, not this one, not this one. Case 3 of the formulas that you mentioned. Nothing. Just remember one thing. Distance is equals to speed into distance is equals to speed into time. Time. So if you make one thing constant, then the things get inversely proportional to time. If you make speed constant, then distance will, now in this case, this speed will come out. So distance will become directly proportional to time. In this way, when you get speed constant, so distance directly proportional to time.
Simple. When you make time constant, so speed directly proportional distance. Simple. Okay, sir. Thank you, sir. Got it. Yeah, next. कोई है कुछ पूछ रहा है क्या? You have some network problem. You type your whatever is your doubt. Whatever is your doubt, you please type. If a person increases his speed by 20%, what will be the percentage reduction in the time taken to reach the same destination? Same destination means same distance. No. Person increases his speed by 20%. 20% को कैसे लिखते हैं? 20/100, that is 1/5. I have told you to make your basics strong of percentage so that you guys remember everything. Speed 1 is to speed 2. There are the two cases. Person increases his speed by this. That is, if in the first case speed is 5 km/h, is increased by 1. That is, in the second case speed is 6. ठीक है, मैं इसको और first second की बजाय A case B case ले लेता हूँ. And here I will write the speed ratio. Since they are covering the same distance, same destination, same distance, we have just learned that since when distance is constant, so speed get inversely proportional to time. So speed ratio, since the speed ratio is 5:6, so time ratio will be 6:5. तो कितना रिडक्शन हुआ? 1 का रिडक्शन. So time कितना हो गया? 1/6 का रिडक्शन. परसेंटेज में निकालना ना, into 100. 16 2/3%. Simple. सिंपल याद रखो, बस ये याद रखना बस. तुम्हारे में और कुछ नहीं आएगा. They will ask nothing. You have to just remember this. Whatever is the ratio of the speed, 5:6, make it inverse, 6:5. Simple, nothing else. बस इसको याद रखो. तुम पिछले सारे फॉर्मूले तीनों फॉर्मूले भूल जाओ तुम चाहो तो. बस ये याद रखो, जो रेशियो लिखा हुआ है स्पीड का, टाइम का उसका उल्टा हो जाएगा. बस से 5:6 है तो 6:5, 5:6 है तो 6:5. बस इसको याद रखो और कुछ नहीं. कुछ भी हो, चाहे वो 4:5 आ रहा हो स्पीड का रेशियो, so टाइम का उसका उल्टा करो, 5:2. दिस इज हाउ द इनवर्स वर्क्स. देन देयर इज अ कुछ भी आ रहा है, जैसे कि डिस्टेंस का आ रहा है 6:5, तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो स्पीड का भी यही आ जाएगा 6:5. अगर डायरेक्ट है so you just have to write same. If it is inverse, just inverse. बस इतना याद रखो, nothing else. इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड सब अच्छी होगी. If a boy goes to school at this and returns at a speed of this, if he takes 144 kilometer for 144 minutes in all, find the distance from his village to school. Now listen to me very carefully. Case A, case B. Case A, case B. In case A, he goes to the school. In case B, he comes back from the school. Ratio of the speed will be 4.5:3:5. So when you cancel out, it will come 9:7. Speed ka ratio. Time ka ratio would be 7:2. If it takes 144 minutes in all, going and coming, that is 7 going, 9 coming back, 7 plus 9, that is 16, जिसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 144 minutes. So 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 divided by 16, that is 9. 7 की वैल्यू निकाल लो आप. 7 into 9, that is 63 minutes. 9 की वैल्यू निकाल लो, 9 into 9 कर, that is 81. So basically कहना क्या चाह रहा है, सुनना बहुत ध्यान से. He goes to the school at the speed of this 4.5 km/h and takes
63 minutes. This is all stupid. Coming back at the speed of a 3.5 kilometer per hour and taking 81. अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है. What is the formula for distance? Speed into time. Solve कर दो बस 4.5 into this. Remember, this is the base. Speed inversely proportional time. Time values it is given 16 equals to this, 1 की value 9, 7 9 the 63, 9 0. So now just target distance is equals to speed हो गई 4.5 kilometer per hour. Since it is given into the minute, I will convert it into an hours. 63 upon 6. So simple काटोगे जब यहाँ पर इसको. So 40, 15 threes are 15 fours are 3 3s are 9, 3 6 are 18 divided by 40. अब इसको 4 से काटोगे तो 4 4s are 16 और 29 आएगा. So 4 7s are 28, 8 1 आ जाएगा तो 47.25. लेकिन अभी 10 भी नहीं तो सिंपल आ जाएगा 4.725 4.725 kilometer आपका distance. Remember, this is the base. You have to remember this steps. The speed ka ratio, time ka inverse, total value 7 plus 9 given 144. I have got the value of 1 and 7 9 the 63 9 9 0. You have to adopt this thought process. Otherwise, things will get very difficult. Because in the one question you can put into d मान लो इसको distance. The main purpose of this thought process is to make your calculation and solving very simple. Otherwise आप लोग को d upon 45 ऐसे ही करते रह जाओगे. d.35 you will just for इसका LCM लोगे यहाँ पर. That will make your calculation. Got my point? इससे शॉर्ट पॉसिबल नहीं है ना. इससे शॉर्ट तो भाई साहब हमारे नॉलेज में नहीं. इससे शॉर्ट तो नहीं हो सकता. क्योंकि अब आपको एग्जाम में क्या करना, सुनना जरा, है ना. एग्जाम में क्या करना, ये तो बहुत छोटा है. क्यों? मैं दिमाग इतना तो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि 9:7 है और मैं दिमाग में कैलकुलेट 9:7 तो मैं टाइम का ही लिखूंगा अपने पेपर पे. मैं पेपर से 7:9 लिखूंगा. अब 9 और 7 16 इतना भी मैं दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 16 अगर 144 है तो 19 तो मैं बस इतना लिखूंगा 7 9 60. समझ रहे हो? मैंने बस इतना लिखना है पेपर पर, बाकी सब दिमाग में करना. और बस ये लास्ट वाला पेपर पे जिसमें तुम मल्टीप्लाई. गॉट माय पॉइंट? सो मिनिमम राइटिंग ऑफ एन एग्जाम. सर 60 कैसा आया? 60 आया भाई हिसाब मिनट को आवर्स में करना. मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम थिंकिंग. गॉट माय पॉइंट? तभी देखो तुम कोई से, मैंने तुम बार बार ये बात समझा रहा हूँ. एग्जाम में वो लोग यही चाहते हैं कि आप दिमाग में ज्यादा सोचो. आपको दिमाग चलाना सीखना है. गॉट इट? दिमाग चलाना सीखना है, कलम चलानी सीखनी नहीं. मतलब वो सब भी सीखोगे ऑफ कोर्स, राइटिंग आर्टिकल वो सब चीजें, बट आपको दिमाग ज्यादा चलाना. यू हैव टू यूज योर ब्रेन मोर. अगर आप लोग उसको ज्यादा यूज करोगे ना तो थिंग्स विल गेट स्मूथ फॉर. क्योंकि अगर दिमाग यूज करोगे तो आप लोग अप्लाई भी कर पाओगे उसको ड्यूरिंग द एग्जाम इजीली. Walking at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 4 hours late. What is his usual time to reach their destination? आप सुनना, देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, देखना कितने सेकंड में. Walking at 60% of his usual speed. 60% को अपॉन फ्रैक्शन में कर लो. देखो ये सब याद हो जाना चाहिए. ये पहले दिन ही मैंने तुम्हें समझाया था. You have briefed you very clearly that you have to learn all of these things. 60% 3/5. Otherwise things will not work. You keep hustling and the things will get haphazard, confusing, bizarre. So basically you have to find the two cases going. First case, second case. Walking at this usual speed. So speed का ratio. Walking at 3/5 of the usual speed. इसको ऐसे लिख लो. Second. ये हो गई इसकी usual. ये हो गया टुडे, आज. Suppose usual speed is 5 kilometer per hour. So today is 3/5.
that is 3 किलोमीटर. How I got the idea 5? यहाँ दिख रहा है 5. कट जाएगा वो 5 से 5 तो 3 आ जाए. Got my point? Direct भी लिख सकते हो 2 day 3:5. Now I have just brief you. Speed inversely proportional to time. So time will be 5:2. Difference of the time is 5 and 3 is 2. This is given equal to 4 hours. One will be equal to 4/2, that is 2 hours. 5 2s are 10 hours. 3 2s are 6 hours. So what is basically happening? Now see very clearly. When he moves at the usual speed, it takes 6 hours. Today, when he made his speed 3/5, so today he's taking 3 hours. What is the usual time? This is your answer, that is 6. समझे? आधा को कुछ भी नहीं समझ आओ मुझे पता है. Then you are on the right track. देखो मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात बता रहा हूँ. If you have came here, तुम कुछ नया ही सीखना है हो, नई ही टेक्निक सीखना है. तो अगर तुम्हें नई टेक्निक सीख रहे हो तो इससे घबराओ मत. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एक बहुत बड़ी OLQ होती है डिटर्मिनेशन. सबसे पहला सवाल वो लोग इंटरव्यू मतलब जनरली PI वगैरह में से बहुत पूछा जाता है. मतलब we have been going through the process many times. तो ये बहुत ज्यादा है कि how did you have made this preparation of your exam, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे सॉल्व करा. तो कोई बोलेगा मैं मैथ में भी, वो लिख तो देते हो I am weak in math, but how you have overcome that, that is your determination. Is your determination. If you are determined, then you will able to do. If you're not determined, you will not. It's not a matter of study, it's not a matter of a technique, it's not a matter of a content, it's a matter of a determination. If you go to and check the PYQs, you will find the same questions they have asked. Remember my words, it is only a matter of determination how you put in to understand these techniques. Got my point? Every time whenever there is new batch, new students, they face the problem. And remember my words, यहाँ आए हो तो कुछ नया ही तो सीखना आए हो, वरना 8वीं तो सब पास करके आए, लोग इतने बड़े रिदम बन गए. ठीक है ना? तो तुम यार कुछ नया ही सीखना है, उससे घबराना मत. उसको नया लिख लो, पढ़ लो, देख लो, सोच लो, समझ लो. इनको पता है क्या करो, नोट्स बना लिए तुमने खूबसूरत से एकदम लाया हूँ. तुम लोग नई नई कॉपियां उठा करके कुछ कोई लाया हूँ, कुछ पुराने भी चला रहे हैं. जब लिखा होता है ना उसको खुद देखा करो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है. आधे से ज्यादा चीजें अपना क्लियर हो जाए. So these are the some basic things. और आप you all are in graduate students. I don't think so. These are the basic techniques of learning is need to be guided. Man walks from his house at an average speed this and reaches his office 7 minutes late. If he walks at an average speed of 45 km/h, he reaches 17 minutes early. Find the distance between the house and office. अब सुनना पूरी. सबसे पहले कुछ नहीं करना है. फर्स्ट केस, सेकंड केस, स्पीड का रेशियो इमीडिएटली 27:45. इसको सिंपल करोगे तो काट लो. 9 3 27, 9 5 45. टाइम का रेशियो इससे इनवर्स हो जाएगा 5:3. टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 और 3 2. अब यहाँ पे आ जाओ. कोई भी इंसान अपने ऑफिस जाता है, किसी टाइम पर पहुंचना होता है उसको. कोई टाइम है उसका फिक्स जिस पर उसे पहुंचना. If he goes at the speed of this, तो वो 7 he reaches his office 7 minutes late. तो जो उसका टाइम है उससे 7 मिनट लेट हो जाता है. ठीक है. और अगर इसी स्पीड पे जाता है तो 17 मिनट्स अर्ली आ जाता है. तो यानी कि पहले आ जाता है 17 मिनट. तो एक ये टाइम हो गया, टाइम ऑन टाइम. कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का? 17, यहाँ से 17 और 17 और 7, दैट इज 17 + 7, दैट इज 24. सिंपल फ्रेमवर्क. टाइम फिक्स, इसमें आर लेट, इसमें अर्ली. सो व्हाट इज द डिफरेंस दे आर गेटिंग? 17 + 7, दैट इज 24 minutes. So value of 1 would be 24/2, that is 12 minutes. 5 × 12, this is your 60 minutes. 3 × 12, that is 36.
Find the distance between the house and office. Now read the question again. He goes to the office at the speed of 27 kilometer per hour and takes 60 minutes. So what will be the distance? Distance is equals to speed into time. कितना स्पीड है 27 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट, 60 मिनट में 1 आवर, so 27 into 1 that is 27 kilometer. Simple question, nothing. ठीक है जी, समझ में आई तुमसे? अगर मैं पूछूं at what is the correct time, तो वो तो इसमें नहीं आ पाएगा, टाइमिंग वैसे नहीं गिवन. ठीक है, बस इतना सोचना है. You just have, पता है जब एग्जाम में जाते हैं तो क्या सोचना होता है, ये तो 1 सेकंड में बन जाएगा, ये तो दिमाग में बन जाएगा. 3:5, 5:3. You just have to think about this. एक बार लेट, एक बार अर्ली, 17 + 7 24. बस इतना सोचना, बस ये और ये, बस इतना से लिखना होता है. this one, ये 60 27 60, इतना सोचना. yes, doubt. सर ऐसे क्वेश्चन में ये 17 + 7 हमेशा करना रहेगा ना? एक अगर लेट और अर्ली का केस है. यस यस सर. हाँ, लेट और अर्ली का केस, कॉमन सेंस है सर ना, डायरेक्ट हो जाएगा फिर. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बस ये तो सोचना होता है, बस इतना लिखना होता है एग्जाम में. बस 17 + 7 24, 2 को 24 के बराबर लिखो, बस इतना लिखना होता है. टाइम का एडिशन इसलिए कर ले कि डिफरेंस है. एक टाइम पे पहुंचते हो, मान लो तुम्हें 5 बजे पहुंचना है, 5 बजे पहुंचना है, 5 बजे, इसमें तुम 17 मिनट पहले आ रहे हो, इसमें तुम 7 मिनट लेट आ रहे हो, तो कितना डिफरेंस आ रहा भाई. यहाँ पे आओगे तुम 4:43 पर, यहाँ पे आओगे तुम 5:07 पर, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस, 5:04 और 4:43 में कितना मिनट का डिफरेंस. ऐसा. चलो जी, करो इस क्वेश्चन को. A man walks from his house at an average speed. This reaches his office 1 p.m. But if he increases speed by then he reaches there at this. At what speed must he run to reach that place to? ये बहुत ही frequently asked questions है, याद रखना. ये basic questions हैं. अब तो खैर मतलब इनसे ऊपर ही पूछे जा सकते हैं, सही बताऊं तो. So don't run. अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, so things will not get easy. तुम्हें बनना ही पड़ेगा डिटरमाइंड. ठीक है ना, कोई भी पढ़ेगा पहली बार सबको अजीब लगेगा. पहली बार जब तुम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी वो भी अजीब, हिस्ट्री पढ़ी होगी वो भी अजीब, सब अजीब ही लगता है, सब कुछ अजीब लगता है. बट इट इज अ डिटर्मिनेशन व्हिच मैटर्स, नथिंग. तुम्हारे साथ कितने ये लोग कौन सा कोई जो करते हैं वो कोई दूसरी ब्रह्मांड से धरती से थोड़ी आए हुए हैं, बस डिटर्मिनेशन का फैक्टर होता है. इट ऑल्स अबाउट द डिटर्मिनेशन हाउ यू पुट इट. सेम कंटेंट तुम पढ़ रहे, सेम स्कूलों में तुम पढ़ के आए, सेम कॉलेजेस में, बीटेक, ऑनर्स, बीएससी, बीए, ये सब सेम ही तो करके आते, अलग थोड़ी करके आते. जो कर लेता है बस वो डिटरमाइंड होता है उसको करने के लिए, और जो नहीं करता लैक ऑफ डिटर्मिनेशन. तुम सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम एज, तो ऐसा तो है नहीं कि एक 30 साल का उठा रखा है, 21 साल का उठा रखा भी बने, ऐसा नहीं. टाइम तुमको 1 घंटा दे रहे तो उसको तो 2 घंटा दे रहा है, सबका सेम चल. किताबें सारी सेम, एनसीईआरटी सब जगह हम पढ़ा रहे सेम, जैसे तुम पढ़ा रहे वैसे. सर आपने बहुत बड़ी बता दी, यू रिमाइंड अस. बड़ी बताई नहीं, रियलिटी बताई. अब मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छे अपना जाती. ठीक है, चलो नेक्स्ट, बहुत बात होगी तुम्हारे से. चलो जी, स्पीड का रेशियो बनाओ जल्दी से. वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड दिस, और सेकंड केस में उसने बढ़ा दी, तो 10 5 + 15 कर दिया, 2:3. तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 3:2. इसमें वो 1 बजे पहुंचता है, पहले वाले केस में देखो ये वही आ गया डिफरेंस. 1 PM पहुंचता है, एंड इन द सेकंड जब उसने बढ़ा दी 15 कर दी, तो वो 11 AM पहुंच जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग्स, 2 आवर्स. यहाँ पे 1 है, 1 है तो 1 की वैल्यू 2 आवर्स गिवन है तुम्हें, तो 2 2 4 और 2 3 6. अब सुनना कहानी को, समझ लो, फील लो इनकी, ये फील लेने वाले क्वेश्चन होते हैं. मैं तो खुद बोलता हूँ इनको फीलिंग से करा करो, इमोशन से. कहानी में क्या कह रहा है कि भाई जब तुम 10 बजे चलोगे, 10 बजे 10 की स्पीड पे चलोगे, 10 की स्पीड पे चल रहे हो और तुम्हें 6 घंटे लगे, 10 की स्पीड पे चल रहे हो, 6 घंटे लगे. सुनना,
और 1 बजे पहुंचे हो, you run at a speed of 10 kilometer per hour, it takes you 6 hours to reach at 1 p.m. At what time did you started? ये क्या होता है 1300 hours होता है ना, तो 13 में से 6 गए 7 घंटे लगे. That is it, 700 hours you had started. This is your story. अब तो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा इसको. क्यों? क्योंकि मुझे 12 PM पर पहुंचाना है. That is, I need to take 5 hours. 1 घंटा कम लूंगा ना, उसमें 6 घंटे ले रहा था, इसमें 5 घंटे लूंगा 1 बजे पहुंचने में. I will take 5 hours. स्पीड बतानी है तुम्हें बस. पहले डिस्टेंस निकाल लो. डिस्टेंस इज हाउ मच? 10 kilometer per hour at the speed of 6 for 6 hours. So distance is speed into time. That is 60 kilometer per hour. So 60 kilometer. What is the time? This speed you have to find. That is distance upon time. This time 60 kilometer need to be covered in 5 hours. 60 upon 5. That is 12 kilometer per hour. Simple thought process. Simple. Nothing much. So it's all about thought process, emotion, feeling. खुद imagine करो ना, तुम घर से निकले 6 घंटे में 1 बजे पहुंच गए. Got my point? 700 क्या? 700 आओ भैया 700 आवर्स. सुबह के 7 बज रहे हैं भाई. सुबह के 7 बज रहे हैं. 700 कहीं से नहीं आ गया. 700 आवर्स वो तुम्हारी कैलकुलेशन ही लगवा दो भाई. सुबह के 7 बज रहे हैं, दोपहर के 1 बजे. कितने घंटे लगे? 6 घंटे. Got it? अरे बोलो. Yes, sir. समझ Okay, गए? sir. फोर्स में टाइम तो ऐसे ही होता है. हाँ. मतलब मैं तो 700 हो भाई साहब. किसी का बस चला है 700 से डिवाइड कर देता हूँ. 700 भाई 700 आवर्स. सुबह के 7 बजे. चलो जी अगला सवाल. राम बिफोर इतना अर्ली पहले बात का थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा भी समझ लो बहुत है. पहली बार में थोड़ा भी आ गया ना तो समझ जाओ. उसको रिवाइज करोगे ना समझ जाओ. पहली बार जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब पढ़ा था तो समझ में थोड़ी आया. हमारा तो आज तक नहीं आया. तब भी समझ में पढ़ना तो पड़ता ही है. ठीक है ना. किसी को मालूम थोड़ी तुम्हें समझ में आता है कि क्यों मोबाइल ने अटैक करा था, क्या फायदा हुआ. हाँ बोलो क्या बोल रहे. सर माय डाउट सर. रिपीट क्या? योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट योर. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कार्ड ड्राइविंग इसे तो पढ़ाए नहीं. हाँ रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं प्रीवियस. बस टाइम का रेशियो बना के भाई. यहाँ तक तो सब सेम ही था. बस ये याद रख लो कि भाई 6 घंटे लगे थे, 1 बजे पहुंच रहा था तो 6 घंटे स्पीड कितना डिस्टेंस 10 की स्पीड से 6 घंटे चला. 10 × 6 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर. अब तुम्हें स्पीड निकालनी है. अब 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे लगा दो. 60/5. चलो चलो जी ये करना तो बहुत करा दिया. अब मैंने दिमाग बस इसमें ये चला देना. स्टार्ट्स 60 मिनट ऑफ राम रीचेस दिस 24. तुम चलाना इसमें. हम चला. रिलेटिव स्पीड देखो. रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के रिलेशन में है ना. कुछ होगा इनका रिलेशन. अब रिलेशन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के रिलेशन होते हैं. एक ऐसे रिलेटिव होते हैं जिनसे तुम दूर भागते हो. एक ऐसे रिलेटिव होते हैं जिनसे तुम फ्रेंडशिप रखते हो. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही रिलेटिव है. ठीक है ना. ये रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है? दैट इज व्हेन द 2 bodies are moving in the respect of each other. So basically science physics concept. When this they are moving in the same direction, so their final relative speed adds up. Subtracts. When they are moving in the opposite direction, so their speed adds. Next. बस यही था और कुछ नहीं. हमें तो बस ये बताना. बाकी तो तुम लोग समझदार करा ही देंगे क्वेश्चन. ठीक है जी. बाकी इनके क्या होते हैं कैसे कैसे वो सब आप फिजिक्स में पढ़ लेना. अब मुझे बस इतना याद रखवाना तुम्हें कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देना और अगर अपोजिट डायरेक्शन तो उसमें ऐड. रिमेंबर दिस थिंग, नथिंग एल्स. पहला क्वेश्चन कर लो.
A car driving at this speed locates a bus 40 meters ahead of. After 10 seconds, the bus is 60 meters behind. Find the speed. एक यहाँ पे कार है और एक यहाँ पे बस है. ये इससे 40 मीटर आगे. ये यहाँ से इसके पीछे चल रहा है, यहाँ से आगे चल रहा है. So they are moving in the same direction. Car moving at the speed of this. So S1 is 72. S2 is वो हमें निकाल. After 10 seconds, bus is 60 meters behind. मतलब यहाँ पे खड़ा था ये. They are moving. After 10 seconds, car reached at this position. That is, bus is 60 meters behind. Got it? Time taken is 10 seconds. This is the whole story of the question. किसी को इसमें डाउट हो तो अभी पूछ. स्टेप्स पे पूछ ले करो. इस स्टेप्स के बाद ask your doubt at a step. Got my point? यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो भी पूछ. Now, टाइम का फॉर्मूला याद रखना. डिस्टेंस अपॉन स्पीड का होता है. हाउ मच टाइम दे हैव टेकन? 10 सेकंड. कार ने कितने सेकंड टाइम लिया? 10 सेकंड. डिस्टेंस कितना कवर करा? पहले तो 40 कवर करेगी, उसको पहुंचेगी, फिर उससे आगे पहुंचेंगे. दैट इज 40 प्लस 60, दैट इज 100 आवर्स. व्हाट इज दिस इफेक्टिव स्पीड? ना इफेक्टिव स्पीड का तुम एक बार ब्रीफ अप करो. Effective speed, relative speed, whatever you want to say. Since they are moving in the same direction, so speed 1 minus speed 2. 72 is the speed of the car minus x. They are in the kilometer per hour. मेरी सारी कैलकुलेशन जारी. 40 प्लस 60 100 मीटर, ये 10 सेकेंड. तो मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं. How I will convert it into meter per second? By multiplying with 5.80. So this is how my calculation will move on. 10, 40 plus 60, 100, 72 minus x into 5/80. ठीक है जी, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. ये तो 10 पे कट जाएगा यहाँ पर. So 72 minus का x into 5/18 उधर चला जाएगा. 10. 5 2s are 10, 18 2s are 36. X goes here, 36 come here. X is equals to 72 minus 36, that is 36 kilometer per hour is the speed of the bus. एग्जाम में क्या करना है? बस ये लाइन लिखनी होगी. बस याद रखना. बस ये लाइन लिखनी है. क्यों? टाइम गिवन है. डिस्टेंस सर पहले ये जा रहा, पहले 40 करेगा, 60 100 करेगा पूरा. स्पीड इसकी इतनी 72 माइनस एक्स. किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में इतने से करना. बस कट गया. बस ये करना है बस एग्जाम में. बस किसी का दिमाग फास्ट चलता है वो ये भी 2 पे ऐसे काट देगा. 36 72. Not my point. So it all depends on how much fast your mind works. Thief goes away with a Maruti car at a speed of this. The theft has been discovered after half an hour, and the owner sets off in another car at 50 km per hour. When will the owner overtake the thief from the start? चलो करो इसको एक मिनट में. देखो जी. सो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है वो कि एक थीफ था जो मारुति कार में बैठ के चला गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आफ्टर हाफ एन आवर. मतलब यहाँ पे वो ओनर खड़ा है. ये ओनर यहाँ पर है.
After half an hour, so how much distance the thief has covered? Distance is speed into time. Time is half an hour. That is 20 kilometer. और अब thief यहाँ पर है. Thief is moving at a speed of 40 kilometer per hour. Owner is moving at a speed of 50 kilometer per hour. How much time they will take? Distance जो कितना cover करना? Distance upon speed. Distance is 20 kilometer. Speed is how much? Moving in the same direction. So S1, S2. S1 minus S2, that is 50 minus 40, that is 20 upon 10, that is 2 hours. Got my point? That is in the 2 hours, you will put it. Now option of people. Starting में कितना टाइम लगा था? आधे घंटा तो पहले भी लग गया था ना वो, जब उसको पता ही नहीं चला वो सोता रह गया. So total time कितना लगा from the start? From the start, total time is 30 minutes plus 2 hours, that is 2.5 hours. Got my point? हाँ, 2 घंटे लगे ओवरटेक करने में और आधे घंटे वो पहले सो रहा था, उसको पता ही नहीं चला, है ना? सोना भी जरूरी है, नहीं सोओगे तो कैसे चलेगा? चलो नेक्स्ट. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल डिस्टेंस. इसको लास्ट क्वेश्चन करके खत्म, लेकिन आज के लिए बहुत भारी भारी क्वेश्चन तुम्हारे लिए. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली भोपाल इतना है. 2 ट्रेन निकलती दिल्ली भोपाल से इतने इतने बजे पर. ये दिल्ली है, ये भोपाल. इतने बजे निकलती थी शायद से. When I went to Bhopal, would be around. तो चलो देखो. ट्रेन लीव फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल. ये निकली यहाँ से 10 बजे. It started at 10 AM and it started at 10:30. Started at a speed of 120 kilometers per hour, and it started at the speed of 150. So for the starting 30 minutes, that is to reach the at this point, that is 10:30. How much distance covered? 60 kilometer. आधे घंटे में वही 120 की स्पीड से हाफ कर दो, 60 kilometer cover हो. Now now the train is standing at this with a speed of 120, and that another train is standing at this at a speed of. Total distance between the two cities is 600. 60 kilometers so far has been covered. What is the distance remaining is 540. After how many kilometers from the Delhi both trains meet? So कितने time में meet कर लेंगे? आप time निकाल लो. Time is what? Distance upon speed. Now they have to cover 540 kilometers. Speed is moving in the opposite directions, so speed will add up. 120 plus 150. That is 540 upon 270. That is 2 hours. 2 hours. So after 30 minutes, more 2 hours it will take. This is at some point where they will meet. This is the meeting point. This train started at 120 kilometers and takes 2 hours 30 minutes to reach this point. 60 kilometers ये हो चुका. अगले 2 घंटे में it will take 120 into 240 kilometers. So total distance कितना हो गया? 60 plus 240. That is from the Delhi, it will be 300 kilometers where they will. Have you got anything? बताओ जल्दी से. तुम लोगों को बोलने में दिक्कत तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं तुम लोग बोलने में दिक्कत आती है? Yes sir, got it. Sir, 500. क्या? Yes, sir, got it. चलो वेरी गुड. 540 किलोमीटर
फिर ऐसा है भाई साहब, ये 60 किलोमीटर टोटल था, 10:30 बजाओ ना, 10:30, ये वाली ट्रेन तो 10:30 चलेगी ना, भोपाल से 10:30 चलनी है, ये आधे घंटे में 10:30 तक तो आ जाए पहले। अब ही तो कंपेयर करो कि 10:30 बजे दोनों तरफ, इमेजिन करो अब दोनों तरफ ट्रेन में चलना शुरू करो, ऐसे ऐसे इमेजिन करो, है ना, ऐसे चलना शुरू करो, ऐसे बीच में कैमरे, ठीक है। 60 किलोमीटर ये हो गया, 240 ये हो गया, 60 + 240 दैट इज 300 किलोमीटर। दिस इज योर मीटिंग पॉइंट, गॉट इट। चलो जी, आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत ही खतरनाक सवाल है, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि काफी कुछ नया भी सीखा। डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास। कल मैं एक तो इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा ट्रेन वाले, मतलब कल मोस्टली ट्रेन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी कराऊंगा सारे, ट्रेन मैन वाले सारे, ठीक है जी। सो डोंट फॉरगेट टुमारो टू अटेंड टुमारोज क्लास। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस क्लास को दोबारा देखा करो, रिकॉर्डिंग्स का फायदा उठाया करो, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया करो, दोबारा देखा करो, वॉच इट अगेन एंड अगेन, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, उसमें देखो कि इस स्टेप पर क्या बोला सर ने, और मेरे को इस स्टेप में प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर जाके देख लो क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं समझ, खुद देखो तो ज्यादा बेटर समझ। और मैं पॉइंट, तो बस हम तो ये कह सकते हैं, बाकी तो आपकी श्रद्धा है, आपने बच्ची, ठीक है जी। फॉलो दिस थिंग। सर कितना अपलोड कितना बजे होगी, बस यहाँ से निकलते भेज देते हैं अपलोड, बस तुम जैसे ही छोड़ोगे वहां पहुंच जाएगा, ठीक है जी। विद इन 2-3 मिनट से थोड़ा सा लोडिंग का तो टाइम लगती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय हिंद। थैंक यू सर।